So welcome to lecture 4. Hello everyone. In this lecture we are going to study about the PCR and bioreactor. Bioreactor is nothing but the fermenter. So let's start with the lecture number 4 of biotechnology principle and process. So here we are going to study about the gene amplification. Amplification of gene of interest by using a technique called as PCR, that is polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. Actually, this is the name of this machine. This machine is called as PCR machine, or also called as thermal cycler, because high temperature is kept. High temperature means around 95 to 96 degrees. So that is high temperature. So in PCR, the multiplication of the gene of interest is going to happen in vitro. Vitro means glass. I told you before that. Two sets of primer and enzyme DNA polymerase is going to use. So primers are small chemically synthesized oligonucleotide which are complemented to the region of DNA. So for this process, generally why this process is going to use? So imagine कि कहीं पर कोई मर्डर हुआ है, क्राइम हुआ है और फोरेंसिक टीम वहाँ पर गई है और जिस पर्सन का मर्डर हुआ उसके ऊपर कुछ स्पेसिमन मिले अनदर पर्सन के जो कि सस्पेक्ट है, तो उसका अगर डीएनए कम क्वांटिटी में मिला, सपोज कुछ हेयर्स गिरे तो हेयर्स के नीचे भी डीएनए रहेगा, तो डीएनए कम क्वांटिटी में मिला है, उसको ज़्यादा करना है, मल्टीप्लाई करना है, एम्पलीफाई करना है, तो उसके लिए ये मशीन यूज़ की जाती है और जो टेक्निक है उसको भी ये नाम यूज़ किया जाता है, दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अब हम देखेंगे कि क्या लग रहा है फॉर दिस प्रोसेस, मीन्स व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस process. If we see about the basic requirement, it will need DNA template, then primer and enzyme. These are the three things which are necessary for this PCR. So initially we need the DNA template, means which is any source that contain one or more target DNA molecules which are to be amplified. So they can taken as a template. So what is in my DNA template? Any source which we are going to take is that contain one or more target DNA molecule to be amplified so this can be taken as template. And number two things, after this template what we need the primer. So primer, number two thing is needed a primer. So what is in my primer which are oligonucleotide, usually 10 to the 18 nucleotide long, that hybridize to the DNA region, the DNA which we are taken, and one to each strand of this double helix. Two primer are required to these primers and are oriented with their ends and facing each other, allowing this synthesis of DNA toward the one another. So what is in by primer? These are nothing but the oligonucleotides which usually contain 10 to 18 nucleotide. These are long, hybridized to the target DNA. Means the DNA which is introduced in the PCR machine to target DNA region. One to each strand of the double helix, and these two primer are required. And these primer oriented with their facing end, so that they can allow their ends facing each other and allowing the
synthesis of DNA toward one another. So this is the function of these primers which will initiate this process. Then third thing is needed. This thing is nothing but the enzymes, means DNA polymerase enzyme. Third is enzyme. Generally, for this process to catalyze, means to amplify the DNA, once the nucleotide came, so they should be aligned in such a way that the another strand copied to it is going to form with the help of polymerase enzyme, and that polymerase enzyme is DNA polymerase. DNA polymerase. But being in this device, PCR device, temperature is high. So we need the DNA polymerase which can withstand to that temperature, being temperature is high. तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर में एंजाइम को वर्क करना है, उसको पॉलीमराइजेशन करना है, तो ऐसा एंजाइम चाहिए हमको कि वो ज़्यादा टेम्परेचर को वर्क करेगा. तो ऐसा डीएनए पॉलीमरेज कौन सा रहेगा? टैक पॉलीमरेज. टैक पॉलीमरेज ये एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है. TAQ मतलब थर्मस एक्वाटिकस. थर्मस एक्वाटिकस. एक्वाटिकस तो ये माइक्रोब है. तो यहाँ से so the DNA polymerase which is stable at a high temperature, means greater than 90 degree, is required to carry out the synthesis of new DNA, and the polymerase which is generally used in this PCR reaction is known as Taq polymerase, which is going to isolate from the bacteria whose name is Thermus aquaticus. Aquaticus. Therm is temperature. So other thermostable polymerase can also be used instead of this enzyme. So once we are going to see the technique. This is the technique. Amplification of gene of interest. Here it is. So three steps are involved, that is denaturation, annealing, and third one is extension. It's denaturation, here is the annealing, and here is the extension. What we are taking the specimen of DNA. This is used for several purposes. Like initially I told you, means suppose from crime spot we took the small amount of DNA that is need to amplify, so we can do the DNA fingerprinting and can figure out the criminal from the suspected persons, suspected peoples. So what is going to happen in this process? If we see about the working mechanism, one by one we can see. The first is denaturation. So what is going to happen in the denaturation? In this step, that this target DNA, which we already took, so this target DNA is heated to a high temperature, near about at 94 degrees Celsius. Temperature used here is 94 degrees Celsius, which result in the separation of the two strands, and each single strand of the target DNA act as template for the DNA synthesis. Here it is going to happen. This is double strand DNA. Due to high temperature 94 degrees Celsius, denaturation happen. Denaturation means what? The DNA which is double helical, the hydrogen bonds are going to break so that it will become single stranded separator, so that the new nucleotides are going to attach to a respective open single strand. So that's why. And already I hope you studied the denaturation and renaturation, the molecular basis of inheritance. Above the temperature of 80 degree, the DNA is going to denature. Means its natural form is going to disturb. That is denaturation. So this is happen. Heating of target DNA gene of interest at high temperature to separate the strand. Now each strand, means the separated strand, will act as template. Template, you are familiar with this word ना? जैसे कंस्ट्रक्शन करते देखिए, वो जो सीमेंट लगाते हैं तो पहले ऐसे लकड़ियाँ लगाते हैं, फिर बाद में ऐसा वो पुट्ठा जो होता है वो रखता है, मतलब खोखे का कवर, टीवी कुछ बॉक्स लाते हैं ना वो कवर, फिर वैसा उसके ऊपर सीमेंट डालता है, तो वो हो गया टेम्पलेट. टेम्पलेट मीन्स साइट, आधा फिक्स, जिसके ऊपर दूसरी चीज़ तैयार हो गई. सो दीज आर द टेम्पलेट्स. नेक्स्ट टेक्निक इज एनिलिंग. नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी एनिलिंग. अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, 94 डिग्री, 94 to 96 degree. Here temperature required is less, around 55 degree, and here temperature required little bit more, 72 degree. So one by one we are going to see. The second stage is annealing. Annealing means when one by one, this is the
open strand. So one by one nucleotide, when it is going to attach and will form the linear, in a linear fashion, it will form the annealing. So here it is going to happen. This is single strand, this is single strand. So this primer is going to attach, and see about polarity here is 5 dash, third dash, third dash, 5 dash, or we can say third dash, prime or terminus. So this primer is going to attach and it will add the nucleotide in a linear manner. So the joining of two primer at 52 degrees Celsius, 52 to 55 degree, this temperature is needed for this step, that is annealing at the third end of DNA templates. So remember this one. So what is going to happen in this technique? In annealing, the two oligonucleotide primer, namely anneal, anneal means hybridize, hybridize to each single strand DNA template, since the sequence of primer is complementary to third end of template. This step is carried out at lower temperature depending on the length and sequence of primer. So this is the second technique, that is annealing. Then the third step is extension, or we can say the primer extension or polymerization. So this is polymerization or primer extension, polymerization, or we can say primer extension. This is the stage, third. So with the help of, now when these nucleotides are going to add here one by one, one by one, so here polymerase enzyme will add them in a sequence wise, like we know the zip of pant. So once we close the chain, these all means whatever the structures are there, they are going to fix. So like that polymerization is going to happen. One by one nucleotide is going to attach in a linear fashion so that it will become a polynucleotide chain, long chain. So that is the function. So what is going to happen? This is the final step in the extension. So where Taq polymerase, which is derived from thermophilic bacteria, that is Thermus aquaticus, synthesize DNA region between the primer. And here what is going to use? Here this is also going to use DNTP, means deoxyribonucleotide triphosphate. Deoxynucleoside triphosphate. This is going to use, along with this magnesium ions are also used. It means the primer extended toward the each other so that the DNA segment lying between the two primer are copied, and the optimum temperature for this reaction is near about 72 degrees Celsius temperature is required. So to begin the second cycle of DNA is again heated to convert all newly synthesized DNA into the single strand, and each of which can now serve as a template for the synthesis of more new DNA strands. So this is the simple technique. So thus this extension product of one cycle can serve as template for subsequent all the cycles, and each cycle essentially double the amount of DNA from the previous cycle. So as a result, from a single template molecule, it is possible to generate 2n molecule after the n number of cycle. What is going to happen here? The extension product of one cycle can serve as a template for the subsequent cycle, and for each cycle essentially a double amount of DNA from the previous cycle. So as a result, from a single template molecule, it is possible to generate 2 raised to the power n molecules after the n number of cycles. So here you can see amplified 1 billion cycles, 1 billion times. The DNA is amplified after 30 cycles. So remember 3 easy step: denaturation, annealing, extension. डीनेचुरेशन के अंदर डीएनए ब्रेक होगा, एनिलिंग के अंदर न्यूक्लियोटाइड फिर लाइन से यहाँ पर लगना स्टार्ट हो जाएगा, और एक्सटेंशन के अंदर उसको बढ़ाने का काम किसका है? ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज थर्मस एक्वाटिकस. वो एंजाइम उसको लाइन से लगाएगा. उसके लिए उसको लगेगा डीएनटीपी मीन्स डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और मैग्नीशियम आयन, टेम्परेचर लगेगा 72 डिग्री, और वो लाइन से लग के फिर उससे प्रोड्यूस होगा.
Through the continuous replication, the DNA segment is amplified up to 1 billion copies, and this amplified fragment can be used with a vector for further cloning. तो उसके लिए भी ये काम को आने वाला है। एप्लीकेशन में देखेंगे हम क्या क्या होना है। तो देखो यहाँ पर भी PCR permit the early diagnosis of malignant disease. Malignant means harmful disease, lethal, such as leukemia, lymphomas. These are the type of cancer among highest developed countries. Cancer research already being used routinely. PCR as it can be performed directly on a genomic DNA sample to detect the translocation of specific malignant cell. Malignant and benign दोनों पता होना चाहिए। Malignant मतलब कैसा होता है? सपोज ये एक ट्यूमर है और ये ट्यूमर के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग नहीं और ये ब्रेक हो गया, तो अब ये ब्लड के साथ क्या होता है, पूरे बॉडी में कहीं पर भी स्प्रेड हो सकता है, तो इसको कहा जाएगा मैलिग्नेंट. सो दिस इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट मीन्स हार्मफुल. दिस इज मैलिग्नेंट, इट मीन्स इट इज हार्मफुल. तो ये याद रखिए. तो क्या होगा यहाँ पर, मैलिग्नेंट सेल्स एट सेंसिटिविटी एटलीस्ट 10,000 fold higher than that of other method. PCR permit the identification of non-cultivatable, slow-growing microorganisms such as mycobacterium, anaerobic bacteria, virus, ये सब. आपको पता होगा कि रिसेंटली अभी जो कोविड पैंडेमिक है, तो वायरस को हमारे बॉडी में से डिटेक्ट करने के लिए भी यही टेक्निक यूज़ किया जाता है, जिसको कहा जाता है RT-PCR, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो ये यूज़ किया जाता है. The basis of PCR diagnostic application in microbiology is the detection of infectious agent and discrimination of non-pathogenic from pathogenic strain by virtue of specific gene. Viral DNA can likewise detected by PCR. मतलब वायरस को भी वायरल DNA को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो ऑन, ये पढ़े तो समझ में आता है. हाई सेंसिटिविटी ऑफ PCR प्राइमर PCR permit virus detection soon after the infection even on the onset of disease, जो अदर मशीन नहीं कर पाता. तो सच अर्ली डिटेक्शन में गिव राइज फिजिशियन फॉर ट्रीटमेंट, क्योंकि जितने जल्दी डिसीज डायग्नोस होगा उतने जल्दी हमको ट्रीटमेंट करना ईजी जाएगा. तो अमाउंट ऑफ वायरल लोड इन अ पेशेंट कैन ऑल्सो बी क्वान्टिफाइड बाय PCR बेस्ड क्वांटिटेशन टेक्निक. तो देखिए यहाँ पर देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग द PCR. तो PCR कंपोनेंट क्या लगे हमको, पहले लगा DNA सैंपल, उसके बाद हमको लगे थे प्राइमर, देन न्यूक्लियोटाइड, देन दिस DNA पॉलीमरेज एज पैक पॉलीमरेज, मिक्स बफर, PCR ट्यूब, और ये जो मशीन है ये मशीन. तो क्या क्या हुआ था समझ में आता हमको ये तीनों स्टेप्स में. अब देखिए जो PCR है उसके अंदर क्या क्या हुआ था, मतलब मेथड क्या और रिमार्क्स क्या. Diaplasmid mediated gene transfer, which is an excellent and highly effective system that is limited to a few kinds of plant. तो हमको पता है ये डायप्लाज्मिड को कहाँ पर यूज़ करें, ट्यूमर इंड्यूसिंग. देन नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट. जीन गन ये भी देखा है, यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड टिश्यू, इजी एंड इनएक्सपेंसिव, मतलब लेस कॉस्टली. देन माइक्रो इंजेक्शंस, only one cell can be injected at a time. So this is possible with the help of micro injection. Electroporation, electric current is used to make the pores in the particular cell of animal plant. तो उसके अंदर फिर क्या करेंगे, वेक्टर डालेंगे. फास्ट कॉम्पिटेंसी में ये हमारा हो चुका है, प्रीवियस लेक्चर देखिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर अवॉइड कर रहा था बोला. Limited to a plant cell, protoplast can be regenerated into a viable cell. Liposome function, lipid, fat plus oil. Soma means body. So limited plant cells, protoplast that can regenerate into a viable plants and direct gene transfer into the plant protoplast. तो ये भी पता है. अब देखिए इसके एप्लीकेशन क्या है. व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ PCR. इसके एप्लीकेशन जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कोविड जो पैंडेमिक है, तो वायरस हमको पता है कि स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर होगा तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं. तो इसके एप्लीकेशन क्या है ये देखना है हमको वन बाय वन. एप्लीकेशन, सो इट्स इफ वी सी इट्स एप्लीकेशन इन डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन. डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन. पैथो मीन्स डिसीज, जेन मीन्स
producer. Disease causing agent is called as pathogen. So pathogenesis use the technique which is based on detecting specific enzyme or specific antibody against a disease related protein. So but this technique cannot be used for detecting the infectious agent that are difficult to culture or that persist at a very low level of the infected cells. So to overcome these all problems, this technique is useful. Means if we use PCR based assay, PCR based assay मतलब टेस्ट, PCR को यूज़ करके हम जो टेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो डेवलप किया वाला है, तो ये क्या करता है, इट विल डिटेक्ट presence of gene sequence of infectious agent तो ये डायग्नोस कर लेता है, इसलिए ये यूजफुल है. देन डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, diagnosis of specific gene mutation, diagnosis of specific mutation. तो ये याद रखिए. तो पीसीआर को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, पीसीआर कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ specific mutation which is responsible for causing a particular genetic disorder, because we know what's by mutation. These are the sudden inheritable change in an offspring when there is a fault came into the gene. So I already discussed this mutation. For that you can see my previous lecture in principle of inheritance. There I explained the mutation in detail. So genetic disease before the actual onset of disease means once the disease is going to happen, before that if mutation is going to arise or something is there that can lead to a mutation, that can be diagnosed with the help of this PCR. So this by using this PCR, some disease like some mutation genetic disorder like PKU, then muscular dystrophy, sickle cell anemia, these diseases, muscular dystrophy, sickle cell anemia, AIDS, hepatitis, chlamydia, then TB means tuberculosis can be diagnosed. So PCR, ELISA and WBT, these three are the technique. ELISA, PCR and WBT. Actually these three techniques are used for this AIDS. If ELISA is confirmed, then for more confirmation WBT test is going to use, that is Western blot test, and ELISA is enzyme linked immunosorbent assay. Then again, what's the use of this PCR technique? For DNA fingerprinting. So PCR is of immense value in generating the abundant amount of DNA for the analysis of DNA fingerprinting, which is used in the forensic science to link the suspect DNA to the DNA which is recovered from the crime scene. ये मैंने बोला था आपको कि जहाँ पर क्राइम सीन होता है वहाँ से स्मॉल अमाउंट में DNA लेंगे, PCR में डालेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, उसकी DNA फिंगरप्रिंटिंग करेंगे और जो सस्पेक्ट है उससे मैच करेंगे. इफ इट इज मैच, द क्रिमिनल इज आइडेंटिफाइड. Then in parental diagnosis means parental dispute अगर होता होगा, parental diagnosis. So useful in the detect genetic disease in the fetus before the birth, and if suppose parental diagnosis मतलब dispute केस में बोले तो मतलब एक पर्सन का वो चाइल्ड है या नहीं, वो यूज़ का वो देखने के लिए भी हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं. सो पैरेंटल डायग्नोसिस मतलब यहाँ पर क्या मीनिंग होगा, यूजफुल टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसीज इन फीटस बिफोर बर्थ. जेनेटिक डिसीज इन फीटस बिफोर बर्थ. तो ये फंक्शन है. उसके बाद देखो डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन. ये हो गया.
फिफ्थ, डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन। ये पहले रब कर लेता हूँ, मतलब इजी आपको दिखेगा। देन फिफ्थ एप्लीकेशन, डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन। Diagnosis of plant pathogen. So many diseases which are related to plant, these can be diagnosed by this technique, PCR. For example, if we see plant pathogen are going to diagnose. So which kind of pathogen? Like viroids, which are associated with the apple, grape, and citrus. Then viroids means we know smaller than the virus. These are the viroids. So viroids which are associated with the apple, grape, and citrus. These can be identified by this technique. Then viruses, plant viruses like TMV, yellow mosaic virus. So these, and along with the bacteria and mycoplasma too. Bacteria and mycoplasma. These can be detected by means of this technique, PCR. And one more application is there, detection of specific microorganism. Detection of specific microorganism. Specific microorganism. So this is used to detect the specific microorganism from the environment of particular soil sample or sediment or water. We can diagnose the particular microorganism from soil sample or sediments or from water sample. We can diagnose particular microbe. So these are the applications of this PCR. In the next slide again there are the application for this PCR. One chart is given that will be easy for you to memorize what are the application, that is in little bit depth, but this much is enough for you guys. But still you can do more by using this molecular identification, sequencing, and genetic engineering. These are also the function of application of this PCR. In molecular archaeology, to detect age or something means from the specimen of genetic material. Epidemiology, study cause of disease, how it is going to cause the infection, mutation. Molecular ecology, DNA fingerprinting, classification of organism, because right now we saw the particular specific microorganism can be isolated, specified from a given soil sample, water sample, or sediment. Then genotyping, gene prenatal diagnosis, sex diagnosis, genetic defect diagnosis, mutation screening, drug discovery, genetic matching, detection of plant pathogen, plant and animal. Then bioinformatics, we know the use of information technology in the biology, genomic cloning, HGP. Then site directed mutation and gene expression study. So I told you this is the application of this RT-PCR, means real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction for COVID-19. I added this slide for more information. COVID-19, you know why 19 is given, because in the December 2019, in the Hubei province of China, the virus was firstly found. Actually, the first patient of COVID means this coronavirus. Actually, it is called as SARS-2. SARS-CoV-2. You can see a full lecture on coronavirus in my previous lecture. There you will find the complete lecture on this COVID. SARS means severe acute respiratory syndrome, COV, coronavirus. Actually, first patient was found in the 1960 in United States. Before that also, but for the coronavirus name is given from that time. So its cost is near about 2600 to 4500, and generally near about 4 to 5 hours are needed to figure out that pathogen from given specimen. What is the advantage? Test directly detect the virus, give accurate result and high specificity test. But disadvantage is cost is high, takes some time, more time, and require the trained staff and lab, because knowledge is needed for this technique. This is the technique for RT-PCR. Then like PCR, there is one more technique is also there.
This is added for extra knowledge. LCR, that is leakage chain reaction. We know the ligase enzyme which can join the DNA fragments. So in the PCR we use only one enzyme was there, like a Taq polymerase for polymerization. Here we are using DNA ligase also. So LCR differ from the PCR as it amplifies the probe molecule rather than the production of amplicon through the polymerization of nucleotide. Two probes are used per each DNA strand and are ligated together to form a single probe. And LCR use both, means DNA polymerase and DNA ligase enzyme to derive the reaction. So like PCR and LCR requires a thermal cycler, that's machine. To derive the reaction, each cycle results the doubling of target of nucleic acid molecule. And LCR can have a greater specificity as compared to PCR. So this I already told you what is my insertional inactivation, recombinant insertion of recombinant DNA into the host cell. So this I already explained. We know what was going to happen here. These are the once the cell is transformed, if suppose foreign DNA is going to deposit on the ampicillin resistance site, then it's this characteristic of this particular vector is going to loss, so that it cannot survive on that particular culture of ampicillin. Then obtaining the foreign gene product, the ultimate aim of recombinant DNA technology is to produce desirable protein, and if a protein encoding foreign gene expressed in a heterologous host, a recombinant protein is going to form. So here it is: mammalian cell expression, insect cell expression, yeast expression, prokaryotic, recombinant protein. Means in this vector, suppose we are adding the new DNA, desirable DNA, so it will produce its respective protein, which is not going to produce initially, means when there was no alien DNA was introduced in this vector. After the addition of new DNA, it will produce new kind of protein. New kind of protein means the protein which is coded by that particular gene, which is added here, fixed here. Then obtaining the foreign gene product, cell with foreign gene can be grown in the laboratory and culture can be used to extract desirable protein and purify it by using separation technique. So the cell can be multiplied in a continuous culture. Here used medium drained out from the one side while fresh medium is added from the other side to maintain the cell more physiologically active, so produce larger biomass which yield more desirable protein. Then what is the difference between this LCR and PCR? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? PCR and gene cloning. This PCR is more effective, more efficient as compared to gene cloning. Here only DNA is required. In gene cloning, everything is required, means restriction enzyme, leakage, vector, bacteriophage. This both the techniques are going to happen in vitro, but gene cloning can also happen in the vivo. Cost is less, gene cloning cost more. Automation, here is yes, means automatically PCR machine can work, but in the gene cloning it is manual. Human being is needed to perform this gene cloning. Error probability is here less because machine is there, here human is involved, so more probability of error will be there. Labor intensive, no, here is yes. Here 4 hours are needed, I told you, for PCR, and here for gene cloning here about 2 to 4 days are required. User skill less required because operating with the help of machine. Here skill is required, knowledge of genetics is required. Its application is more. The application of gene cloning is less as compared to PCR. So here are some questions are given, which are based on your concept. So you can give the answer. Means for DNA polymerase to be a functional, divalent cation are required. Which divalent metal ion is required? So we saw in the polymerization reaction, this magnesium ion is required. Name the diagnostic technique that aid in detection of specific mutation. We saw which technique? PCR. Then mention the method where the complex bacterial cell
take up DNA from their surrounding a heat shock. तो कौन सी मेथड रहेगी ये? This method will be for transformation. This one. What is the optimum temperature required for the polymerization step in the PCR? Denaturation, annealing, and extension. So in the extension, polymerization is going to happen. So temperature I told you 94 to 96. Here temperature required is 55 degree, 52 to 55, and here temperature required is 72 degree. So correct answer will be 72 degree. Then which method involve the injection of high speed tungsten particle and coated with the micro projectile in the target cell? तो क्या रहेगा? Ballistic gun or gene gun. ये दिखाया था मैंने प्रीवियस लेक्चर देखा. Now we are going to study about the bioreactor. What is in the bioreactor and what is the function of this bioreactor? Bioreactor is also called as fermenter, which is used to produce a desirable product with the help of microorganism. So this is a bioreactor. तो यहाँ पर देखिए, these are vessels in which the raw material are biologically converted into a specific product like enzyme, microbial plant, animal, human cell. Bioreactor is used to produce large quantity of product and can process 10 to 10,000 liter of culture. Here it is a bioreactor. बहुत काम का है क्योंकि इससे कमर्शियली जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसके लिए काम की चीज़ है बायोरिएक्टर. Here is the bioreactor. So bioreactor described as vessel. I told you what is meant by bioreactor, and there is a control condition is pH, temperature, dissolved oxygen. Everything is to be controlled so that that particular microorganism can grow on the nutrient media and produce a desirable product. So it can be used for the cultivation of microbial plant or animal, and the process can either be aerobic or anaerobic. Means both the methods can be used. So remember this also. Then the bioreactor are commonly cylindrical. Means there is a different size of bioreactors are there. Not only the one size, there are the different conditions are there. Means different kind of bioreactors are there. So these are commonly cylindrical, ranging from size of liter, cubic meter, and are often made from stainless steel. Stainless steel is good because they are resistant. Here is the typical diagram of bioreactor. So here is motor, acid base because pH should be maintained, anti-foam because for some bioreactor foam is needed, or if there is foam that can be removed out. Then sealing agitator, agitation is needed, filter is there, agitator for mixing that nutrient media with microbe, jacket is there, cold water, baffle, air, sparagar, exhaust, the thing which is not necessary is going to exhaust. Then cold water inlet, when the temperature is increased, in order to decrease the temperature, cold water is used. And sensor is there, which can record pH, temperature, and the oxygen concentration. So agitator, which is used for mixing the content of reactor, which keep the perfect homogeneous condition for better transport of nutrient and in order to obtain a good product. क्या करें हम फर्मेंटर में? इजी है, न्यूट्रिएंट मीडिया लाने का, पीएच मेंटेन करने का, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, उसके अंदर एंटीबायोटिक भी डाल सकते हैं हम, हार्मफुल माइक्रोब ग्रो ना हो, स्टरलाइज करना पड़ेगा न्यूट्रिएंट मीडिया को भी और फर्मेंटर को भी पहले, फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा. Baffle is used to break the vortex formation in the vessel, which usually highly undesirable as it changes the center of gravity and system consume the additional power. तो ये भी याद रखना है. Then sparagar, what is the function of sparagar? We can see here sparagar. तो ये भी पता होना चाहिए जो स्टरर है ये है वो. So इनके फंक्शन क्या रहेंगे. Then jacket. So मॉडलिंग कैसा होगा ये रीड कर सकते हैं. So on. These are the types of bioreactor. This continuous stirrer bioreactor, bubble column reactor, airlift, fluidized packet, photobioreactor, stirrer tank fermenter, tubular tower fermenter,
ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, तो मतलब एक अल्कोहल के लिए और एक एंटीबायोटिक सिंथेसिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए ये फर्मेंटर यूज़ किए जाते हैं। तो ये रहेंगे बायोरिएक्टर। तो यहाँ पर दिख रहा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर स्टरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। तो ये दिख रहा है, देखिए एसिड, बेस, पीएच, स्टीम स्टरलाइजेशन, मोटर, फोम ब्रेकर, फ्लैट ब्लेड इम्पेलर, कल्चर बाथ, स्टराइल एयर, सभी यूज़ करना पड़ेगा। इंक्रीज एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, बबल ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, गैस एंटरटेनर। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट डायग्राम दिख रही है, दिस इज सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर, जिसको यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के लिए। और दूसरा जो दिख रहा है वो है स्पैरागर स्टर टैंक फर्मेंटर, बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टराइल एयर बबल इज स्पैरागर। So stirrer facilitate even mix and oxygen availability, and ultimately air can be bubble through this reactor. तो ये दिख रहा है इसके अंदर पार्ट क्या क्या रहेंगे। सो एन एजिटेटर सिस्टम, देन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल, देन टेम्परेचर, पीएच, सैम्पलिंग पोर्ट, पीरियडिकली विड्रॉ द कल्चर। उसके बाद देखिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ये दोनों प्रोसेस रहते हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? ऑल द प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसको कहा जाता है अपस्ट्रीम प्रोसेस। जहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ तो उसको कहा जाएगा अपस्ट्रीम प्रोसेस, और उसके बाद के जो प्रोसेस रहते हैं उसको कहा जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस याद रखना है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या होगा, वंस द प्रोडक्ट इज रेडी it has to be processed for commercial use, and this requires the purification and strict quality control to maintain the efficiency. So the product based on biotechnology must ensure to satisfy the customer need and are not harmful. Therefore through the check करना पड़ेगा of the product, and each level of manufacture is done. So the manufacturing process and the quality control method vary with each product. तो ये याद रखना पड़ेगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में। यहाँ पर क्या हुआ था डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में। उसके बाद देखो बायोरिएक्टर, ये क्या है? तो मैं रेफर टू, अभी मैंने पूरा जो बोला, मैन्युफैक्चर्ड और इंजीनियर्ड डिवाइस सिस्टम टू सपोर्ट द बायोलॉजिकली एक्टिव एनवायरनमेंट, and in one case bioreactor is a vessel in which chemical process is carried out which involve the organism or biochemically active substance derived from such organism। तो बड़े रहते हैं देखिए, और पूरा इनके अंदर फंक्शन होगा बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर और फर्मेंटर, बायोरिएक्टर क्यों नाम दिया? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शन करेगा, न्यूट्रिएंट मीडियम पर सर्वाइव होकर अपने मेटाबॉलिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जो यूजफुल है फॉर ईदर ह्यूमन बीइंग, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमनली सिलेंड्रिकल रेंजिंग फ्रॉम लीटर टू, ये सब बोले वाला। द डिवाइस इज बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज इन टिश्यू कल्चर इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए यूज़ किया जाता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन बायोरिएक्टर क्लासिफाइड एज बैच, फेड बैच एंड कंटिन्यूस कल्चर। कंटिन्यूस मतलब क्या होता है कि उसके अंदर फ्लक्स चार्ज, मतलब न्यूट्रिएंट मीडिया माइक्रोब हम ऐड करते जा रहे, प्रोडक्ट निकालते जा रहे, कंटिन्यूस। और बैच मतलब क्या? एक बार न्यूट्रिएंट मीडिया रखा हमने, माइक्रोब रखे, प्रोडक्ट तैयार हो गया, फिर सब कुछ डिस्कार्ड करने का, फिर और प्रोसेस स्टार्ट करना। तो मतलब एक बार एक बैच बन गई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, अब और दूसरी बैच बनाए और दूसरी बार वो प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं बैच कल्चर। और कंटिन्यूस मतलब क्या? माइक्रोब भी यूज़ करो, न्यूट्रिएंट मीडिया भी यूज़ करो और कंटिन्यूसली प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, तो उसको कहा जाएगा कंटिन्यूस कल्चर। तो एंड कंटिन्यूस एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस बायोरिएक्टर इज द कीमोस्टैट। कीमोस्टैट मतलब समझ में आता है क्या रहना चाहिए कीमोस्टैट, तो ये रहेगा। उसके बाद देखो और एक कंसेप्ट आएगा, देखिए यहाँ पर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन अभी हो चुके हैं, क्वेश्चन अभी जो मैंने बोले थे। यहाँ पर और एक पॉइंट था जो बोल देता हूँ मैं, अब वैसे तो हो चुका है बट वी विल डिस्कस इट अगेन। जीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, तो वो देखेंगे जो रिकमेंड प्रोडक्ट तैयार होता है, ये सब हो चुका था हमारा। जीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, ये तो हो चुका है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, ये तो मैं आपको बोल चुका हूँ।
अभी शॉर्ट में वो बोलूँगा, लास्ट पॉइंट है ये इस टॉपिक का। वैसे तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस हो गया हमारा, मैंने बोला आपको अपस्ट्रीम में क्या आएगा और डाउनस्ट्रीम में क्या आएगा। तो जीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, तो अब क्या होगा, जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया तो प्लांट सेल और एनिमल सेल विथ फॉरेन डीएनए इसको हम मल्टीप्लाई करें, जो आरडीएनए मतलब क्या हुआ, तो अभी बोला मैंने, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, इसमें ये वेक्टर है। अब हमने क्या किया कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, या इसको ही क्या बोल रहे हैं हम, डिजायरेबल जीन। तो ये इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हमने, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बैक्टीरिया में डाल के। तो ये क्या करेगा, अब ये जो न्यू डीएनए हमने इसके अंदर डाला तो वो क्या करेगा, एक न्यू प्रोटीन बनाएगा, अलग प्रोटीन बनाएगा। सो द मोस्ट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज आर एम टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, डिजायरेबल प्रोटीन। So there is a need for the expression of this recombinant DNA to form this protein. So after the cloning, the gene of interest, one has to maintain the optimum condition to induce the expression of target protein and consider producing it on a large scale. So if any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is known as recombinant protein. And the cell having the clone genes of interest, they can be grow in the gene of interest, they can be grown on small scale industry, So these cells to be multiplied in a continuous system where they are used a medium which is passed from one side and fresh medium is added to the another side to maintain their physiologically most active lag phase. तो ये माइक्रोब का हमको पता है, देखो ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम में माइक्रोब को डालने के बाद हमको पता है कि ये फेजेस देखते हैं हम, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। तो लैग फेज में क्या होता है, न्यूट्रिएंट अगर कम रहा, सप्लाई कम रहा, तो उनकी ग्रोथ नहीं होती है, तो ये रहेगा लैग फेज। लॉग फेज को क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंशियल फेज, जहाँ पे माइक्रोब को अगर न्यूट्रिएंट मीडिया मिलता रहा तो उनकी ग्रोथ होती रहेगी। ग्रोथ होने के बाद वो जो मेटाबॉलिज्म करके अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वही किसके लिए यूजफुल है, फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर। So lag phase, no significant increase in the cell. Exponential phase, there will be a rapid multiplication of cell. So this type of culturing method produces a larger biomass to get the higher end of desired protein. Small volume culture cannot give the large quantities of product. So to produce the large quantities of product, we are using that bioreactor, which was required because these bioreactor have the large volume. Bioreactor, I told you this, from 100 to 1000 liter volume, 1000 liter of volume. So these are required, in which raw material are biologically converted into a specific product and individual enzyme using microbe, plant and or human cells. So the bioreactor provides the optimum condition for obtaining the desirable gene product, providing the optimal growth conditions, substrate, temperature, pH, vitamin, oxygen, salt, and one of the most common used bioreactor is stirring type. तो ये बोला था मैंने, तो ये सब याद रखना। दिस ऑल्सो बायोरिएक्टर क्या था, ये पूरी तरह से एक बार रिवाइज कर लेना। और कुछ डाउट हो तो आप नीचे लिख सकते हैं या मुझे बोल सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, फील फ्री टू कांटेक्ट मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर डाउट्स। ये अपस्ट्रीम प्रोसेस में क्या देखा जाएगा, सेल नंबर, ऑक्सीजन, टाइम, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, टेम्परेचर इन सेल्सियस, पीएच, न्यूट्रिएंट और फ्लक्स रेट। फ्लक्स का मीनिंग होता है चार्ज, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बायोरिएक्टर, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया के साथ माइक्रोब को ऐड कर रहे हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड करते तब इसको बोलते हैं इनोकुलेशन, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करेंगे। तो फ्लक्स रेट मतलब कितना ऐड किया,
फिर प्रेशर, ओरिफिसेस, ओरिफिसेस मतलब होल, साइज, टाइम, टेम्परेचर, ये सब देखेंगे। प्रोसेसिंग, फोल्डिंग यूनिट, प्रोडक्ट कैसे तैयार हो रहा है, प्रोसेस, बायोएनालिटिक्स, सेफ्टी, इफिशियंसी, रिकवरी और कॉस्ट, सभी देखा जाएगा क्वालिटी कंट्रोल में। और फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। ये पूरे टेक्निक्स याद रखें। फोर्थ, टू प्रोड्यूस द क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ये है, यानी कि यहाँ पर प्यूरिफिकेशन कॉलम्स है, कॉलम मटेरियल, टॉक्सिन, होस्ट, ये जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होंगे उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि कैसा होगा देखिए, जब माइक्रोब न्यूट्रिएंट मीडिया को यूज़ कर रहा है तो अब क्या होगा, न्यूट्रिएंट मीडियम धीरे धीरे कम होते जाएगा और माइक्रोब की पॉपुलेशन या जो माइक्रोब ने अपना प्रोडक्ट तैयार किया मेटाबॉलाइट, वो हम जो अच्छा वो यूज़ कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम टॉक्सिन प्रोड्यूस होगी। और जब टॉक्सिन का लेवल एक लेवल से बढ़ जाता है तब माइक्रोब की ग्रोथ नहीं होगी फर्मेंटर के अंदर और प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। तो उस समय हमको ये प्रोसेस स्टॉप करना पड़ता है, फिर वापस रिपीट इस प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सब आएगा इसमें, तो इतना याद रखने का ये सब। और ये भी, और इसके आंसर मैंने बोला आपको क्या क्या रहेगा। फॉर डीएनए पॉलीमरेज फंक्शन टू बी डाइवैलेंट कैरेक्टर, मैग्नीशियम लगेगा। डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर द एड इन द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इज पीसीआर। मेंशन द मेथड वेयर बैक्टीरियल सेल्स टेक अप द डीएनए फॉर्म, हीट शॉक मेथड, तो ये हमको पता। कैल्शियम क्लोराइड हम सबको यूज़ करते हो, प्रोसेस करेंगे। पॉलीमराइजेशन के लिए टेम्परेचर कितना लगे, 72 डिग्री। और ये नंबर 5 जो है यहाँ पर क्या यूज़ करें, बायोलिस्टिक और जीन गन। तो ये हो चुका था।